Hello and good afternoon, everybody. Welcome back to Know How Academy's YouTube channel. This is Coach Junaid, your host, your friend, your guide, and this is the third day of what we are discussing. It's all about job interview, the art of successful interview, and I welcome you all once again to this third day. So, are you guys excited for this day three? Are you? Because I am so excited because अगेन आई वॉन्ट टू टेल यू दिस थिंग आई बीन टेलिंग दिस थिंग फॉर लास्ट 2 days. 2 दिन से मैं ये बोल रहा हूँ कि यू गाइज आर रियली फैंटेस्टिक, यू आर सो इंटरैक्टिव. आई रियली वॉन्ट टू congratulate all of you, to your management, to your faculties, and to the entire Indus College. Thank you so much for being so interactive. Thank you so much. So देखते ही देखते 2 दिन जो है वो 2 लाइव सेशंस हो गए. आज तीसरा भी जो है वो होने वाला है. सो हाउ यू गाइज आर फीलिंग अबाउट दैट? Okay, super excited. Thank you so much. I think when you really make this kind of comments, it's really also excites me and give me the energy and passion to present better, and to guide you more and more and to give you better quality content with you. So thank you so much. So आज के सेशन से पहले मैंने एक वीडियो हमने आपके साथ में शेयर किया था. इट्स अबाउट दी हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन एन इंटरव्यू इन इंग्लिश. हमने बड़ी रिसर्च करने के बाद में वो वीडियो बनाया था. और अगर आप अपने नेक्स्ट जॉब इंटरव्यू में आप अगर अपीयर हो रहे हो वहाँ पे, अगर जो तरीका मैंने उस वीडियो में आपको सिखाया, अगर उस तरीके से अगर आप खुद को प्रेजेंट करते हो, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू इम्प्रेस द इंटरव्यूअर. सो आई होप यू हैव वॉच दैट वीडियो. जो लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो ज़रूर देखें. और जो लोग आज नए ज्वाइन हो रहे हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूँ. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. और हम लोग इसमें भी डिस्कस करेंगे इस सेशन के बाद में कि जैसे कि आज थर्ड डे है एंड इट्स गोइंग टू वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस 3 days वर्कशॉप. उसके बाद में भी हम आप लोगों के लिए क्या कर सकते हैं. तो जो भी अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स हो वो आप हमें ज़रूर बताएं, एंड वी विल बी रियली हैप्पी एंड प्लीज टू गाइड यू मोर and to help you grow in your career. So thank you so much once again. So yes, it's day 3 and this is about know how to crack an interview. Okay, so day 1 we discussed about resume and cover letter. Day 2 we discussed about how to create a LinkedIn profile, a professional LinkedIn profile, and today we are going to discuss how to crack an interview. So जो पहले 2 दिन में हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल हम लोग सीक्वेंस में ही जा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जॉब इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए आपके पास एक जॉब एप्लीकेशन होना चाहिए, जिसके लिए आपको जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास रेज्यूमे, आपके पास कवर लेटर और लिंक्डइन, जो हमने डिस्कस किया लास्ट 2 days में. आज हम बात करेंगे कि जब आप इंटरव्यू में अपीयर करेंगे, व्हेन यू विल फेस द इंटरव्यूअर, what exactly you need to do there and how you can impress the interviewer and how can you secure a good job for yourself. So guys, yes, please let us know how was your experience for the past 2 days. There is a poll you can see in the live chat section. So yes, welcome once again to the know how to crack an interview. Thank you so much. So जैसा कि हम लोग 2 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, we are going to make it very interactive. I'm going to share the questions with you and I would like you to share your answer, give your answers as you have been doing for the past 2 days. आप बहुत अच्छे से interact कर रहे हैं, बहुत अच्छे से participate कर रहे हैं आप. So once again, congratulations to everybody, to all of you. Really, you are doing a great job. So let's begin with the day 3 then. Now this is a very important questions, because जब आप जॉब इंटरव्यू में जाने वाले हैं, जब आप जॉब इंटरव्यू में जाएंगे, तो what exactly you need to showcase in a job interview? What are the things that you need to showcase in a job interview?
Technical teams, can we remove this poll so that I can see the comments? So what you need to showcase in a job interview, आपको job interview में करना क्या है, what you need to do, आपको job interview में highlight क्या करना है जिससे कि आपको वो job offer हो जाए, जिससे कि आपको वो job मिल जाए, exactly क्या करना है आपको. I'm obviously going to share with you, but you can also share your inputs. Thank you so much. So I think most of you have loved this session, and I'm really grateful to you. Confidence, communication skills, profile experience, technical skills, knowledge, presentation skills, experience or internships, hobbies, profile, work experience. Exactly. I think this is very nice. Okay. So the thing is that you guys already have the knowledge, okay? You just need to polish this knowledge, you just need to improve this more, and you just need to apply this into the right direction with the right energy, and then definitely it's going to work for you. So, yes, first thing that you need to showcase in a job interview, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जॉब इंटरव्यू में आपसे क्या एक्सपेक्टेड किया जाता है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ. तो आपको सबसे पहली चीज़ जो है, आपको जब आप जॉब इंटरव्यू में जाएंगे, सो यू नीड टू प्रिपेयर व्हाट टेक्निकल स्किल्स यू हैव. आपके पास क्या टेक्निकल स्किल्स है, जो भी जॉब है. जैसा कि हम 2 दिन से जो फॉर एग्जांपल हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव. सो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो जॉब है, उसके अंदर क्या टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, यू नीड टू बी prepared with that before you go to the job interview. The next thing, I think this is one of the most important thing in a job interview, exceptional communication and presentation skills. If you are not a good communicator, if you are not a good presenter, then let me tell you, your technical skills, your knowledge is not going to work for you. Because in a job interview, all you need to do is to communicate, okay? And you need to present yourself, you need to present your thoughts, your answers. So it's all about exceptional communication and presentation skills, because everybody can communicate. Why I'm using this adjective exceptional? बिकॉज कम्युनिकेट तो कोई भी कर पाता है, प्रेजेंटेशन तो कोई भी दे पाएगा, लेकिन एक्सेप्शनल कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स है, वो आपको डेमोन्स्ट्रेट करनी है. आई होप यू आर अग्रीड विद मी ऑन दिस पॉइंट. द थर्ड थिंग, इट्स अबाउट द नॉलेज. सो आपको आपका नॉलेज शेयर करना है, बट इफ यू सी इन द ब्रैकेट, आई हैव यूज दिस अप्लाइड. ओके, सो दैट मीन्स आपको सिर्फ अपना नॉलेज शेयर नहीं करना है, आपको अपना अप्लाइड नॉलेज शेयर करना है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड अप्लाइड नॉलेज? नॉलेज, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. ओके, आपको फॉर एग्जांपल यू वांट टू लर्न हाउ टू स्विम. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. आपको स्विमिंग सीखनी है. आप क्या करते हैं? आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च करते हैं कि स्विमिंग कैसे किया जाता है. आपने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखे, इस तरीके से स्विमिंग किया जाता है. फिर आप जहाँ पे एक स्विमिंग पूल है, जहाँ पे सिखाया जाता है, वहाँ पे भी आप गए, लेकिन वहाँ पे भी सिर्फ आप बाहर से देख रहे हैं कि कैसे जो है वो आपको पानी में डाइव करना है, कैसे आपको अपने जो हैंड्स और आपके जो लेग्स है कैसे आपको मूव करने हैं, और किस तरीके से आपको बैक एंड फोर्थ करके आपको स्विमिंग करनी है. बट कंडीशन इज दैट आप अभी तक आपने पानी में डाइव नहीं किया है. तो वो जो नॉलेज आपको यूट्यूब से मिला है, वो जो नॉलेज जो आपने ऑब्जर्वेशन किया है वहाँ पे देख कर आपने, इज इट गोइंग टू वर्क फॉर यू? क्या आपको लगता है उसके बेसिस पे आप स्विमिंग कर पाएंगे? यस और नो? जो नॉलेज अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया, क्या उसके बेसिस पे आप स्विमिंग कर पाएंगे? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. जो नॉलेज अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है, आप एक बार भी पानी में आपने डाइव नहीं किया है, वुड यू बी एबल टू स्विम? द आंसर इज नो. Why?
बिकॉज वो नॉलेज आपका अप्लाइड नहीं है। एक चीज मैं आपको, ये जो पॉइंट्स आपको समझा रहा हूं मैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज बहुत कम लोग आपको इसके बारे में बताएंगे कि जब आप इंटरव्यू में आप जाते हैं तो वहां पे जब इंटरव्यूअर कोई क्वेश्चन पूछता है आपसे, तो आप उसका आंसर ये दे सकते हैं कि सर इस तरीके से ये चीज़ होती है, बट इंटरव्यूअर वांट्स टू नो क्या आपने वो चीज़ प्रैक्टिकली करी या नहीं करी। जब अगर आपने प्रैक्टिकली वो चीज़ करी है तो उसका आउटकम क्या था, उसका रिजल्ट क्या था, उसमें आपको क्या चैलेंजेस फेस हुए और आपने कैसे उसको ओवरकम किया, दैट्स व्हाट इंटरव्यूअर वांट्स टू नो। सो इंटरव्यूअर वांट्स टू सी योर अप्लाइड नॉलेज, नॉट ओनली knowledge. I hope you are getting this point now. सो अप्लाइड नॉलेज की रिक्वायरमेंट है आपको वहाँ पे, तो आप जब भी किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, मेक श्योर कि आप जहाँ पे जो भी बात आप कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं आप अप्लाई किया है और आप उसका एक्सपीरियंस वहाँ पे आपको शेयर करना है इंटरव्यू में। करेक्ट। नेक्स्ट थिंग, जो आपको, आपका जो भी एक्सपीरियंस है, अगर आप फ्रेशर हो तो आपका जो भी प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं या कोई इंटर्नशिप आपने किया है उसके बारे में आपको इंटरव्यू में बताना है। देन द नेक्स्ट थिंग इज you have to show your passion, your enthusiasm for the role and a genuine interest in the company. अब एक चीज है यहाँ पे, एक और पॉइंट आई रियली वांट यू टू अंडरस्टैंड कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, और आई वुड से एवरी कैंडिडेट इज ओनली इंटरेस्टेड इन द जॉब। आपको या हमें, मोस्टली जो भी कैंडिडेट्स है उनको कंपनी से कोई मतलब नहीं है, उनको तो बस जॉब मिल जाए वो बहुत है। कोई भी कंपनी अगर आपको अच्छा पैकेज, सैलरी पैकेज देगा या अच्छी पोजीशन आपको देगी तो आप वो जॉब ज्वाइन कर लेंगे, आपको कंपनी से कोई मतलब नहीं है, हमें कंपनी से कोई मतलब नहीं है। ये मोस्टली हर एक का एक एटीट्यूड होता है, करेक्ट। बट अगर आप सिर्फ अपने जॉब में ही इंटरेस्ट शो करोगे, जब आप बात कर रहे हो इंटरव्यू के अंदर, खुद को प्रेजेंट कर रहे हो, देन यू आर नॉट गोइंग टू गेट एन ऑफर। एम्प्लॉयर्स, जो इंटरव्यूअर्स है, वो ये जानना चाहते हैं कि आपको इस कंपनी में कितना इंटरेस्ट है, आपको इस कंपनी को भी ज्वाइन करना है या सिर्फ आपको जॉब ही ज्वाइन करना है, क्योंकि उनको भी पता है कि आप यहाँ पे जॉब के लिए है, आपको कंपनी से कोई मतलब नहीं है। आज यहाँ पे अगर कोई आपको फॉर एग्जाम्पल 20,000 की सैलरी ऑफर हो रही है और कोई और कंपनी दूसरी आपको 25,000 की सैलरी ऑफर कर रही है, तो यू विल मूव देयर, राइट। सो प्लीज अंडरस्टैंड, आपको सिर्फ जॉब में इंटरेस्ट शो नहीं करना है, आपको कंपनी में भी इंटरेस्ट शो करना है। और वो कब होगा? व्हेन यू विल रिसर्च द कंपनी। सो यू नीड टू रिसर्च अबाउट द कंपनी। हमने एक वीडियो पूरा इसमें जो है हमने क्रिएट किया है और अपलोडेड भी है हमारी प्लेलिस्ट में, और वो उस टाइटल से है कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आवर कंपनी। उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि हाउ यू कैन शो योर इंटरेस्ट इन द कंपनी। आपको कंपनी को रिसर्च करना होगा, उसके विजन को रिसर्च करना होगा, उसके कोर वैल्यूज़ को आपको रिसर्च करना होगा, कंपनी की जो भी पॉलिसीज़ है उनको रिसर्च करना होगा, कंपनी के क्या करंट और पास्ट प्रोजेक्ट्स थे उनको रिसर्च करना होगा, कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ है या जो भी उनके मैनेजमेंट में कौन है उनको रिसर्च करना होगा। जितना ज़्यादा आप कंपनी को रिसर्च करेंगे उतना ही बेटर आप उसमें अपना इंटरेस्ट शो कर पाएंगे, करेक्ट। Okay, we also need to connect to the people so we'll get more idea about others' thoughts. So yes, it's may necessary to take interest on that. Yes, we have to take interest in the company. Okay, and not only in company but also you need to research about them. I will let you know. मैं आपको बोल रहा हूँ कि बहुत अभी भी इतना कंटेंट है जो हम 3 दिन में आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आई थिंक अगर हम 30 दिन की ट्रेनिंग करें ना, फिर भी आपको लगेगा कि एवरी डे यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू। ओके, इतनी चीज़ें आपको जानने की और सीखने की ज़रूरत है सिर्फ जॉब इंटरव्यू के बारे में और अपने सॉफ्ट स्किल्स के बारे में। सो डेफिनेटली विल डू समथिंग ऑन दैट इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड फॉर दैट। P.U. Patel is saying if don't want to do job, so if you don't want to do a job then you don't need to apply. It's very simple, right? Okay.
एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, अगर आप में से किसी के अंदर सेलिंग स्किल्स नहीं है, अगर आपको सेल्स करना नहीं आता है, आपको सेल्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो प्लीज understand this thing, please listen to me, that you need to develop the selling skills because interview is all about selling yourself. आपको खुद को सेल करना है वहां पे, क्योंकि आप अकेले नहीं हो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, देर आर 10, 20, मे बी 40, 50 कैंडिडेट्स, सब वहां पे अप्लाई कर रहे हैं। आप कैसे बेस्ट तरीके से खुद को प्रेजेंट करेंगे, उस पर डिपेंड करता है कि वो आपको हायर करेंगे या किसी और को हायर करेंगे, राइट? सो प्लीज खुद को सेल करना आपको सीखना होगा। तो खुद को कैसे सेल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि हाउ यू कैन सेल योर सेल्फ। ओके, सो वी आर गोइंग टू टीच यू एवरीथिंग। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर कोई प्रोडक्ट आपको सेल करना है, तो उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आप क्या करेंगे, आप उस प्रोडक्ट के जितने भी एडवांटेज है, जो भी बेनिफिट्स है, वो आप बताएंगे। आप उस प्रोडक्ट के बारे में बेस्ट प्रेजेंटेशन देंगे। ओके, so that the customer can feel like, okay, this is the product I want to buy, this is the best product from me. सेम वे जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो आपको इंटरव्यूअर्स के सामने ऐसे खुद को प्रेजेंट करना है, अपने बेनिफिट्स आपको बताने हैं कि आप उस कंपनी के लिए क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो एम्प्लॉयर्स को ऐसा फील होना चाहिए, दिस इज द बेस्ट कैंडिडेट, दिस इज द बेस्ट एम्प्लॉय आई वांट टू हैव इन माय कंपनी। यू गेटिंग माय पॉइंट? So you need to sell yourself. I hope you understood all these points. Okay, so yes, sell yourself. So I hope all these points are clear. Definitely Pew will teach you how to sell. Okay, and I think selling is a very important skill we all need to have, because मैं सिर्फ इतना ही अभी आपको बता सकता हूँ because we don't have that much time, but it's not about selling, it's about convincing. अगर आप किसी को भी अपनी बात पर कन्विंस करवा सकते हैं, उसको कन्विंस कर सकते हैं, तो आप सेल्स कर सकते हैं। सो इट्स सेलिंग को लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई प्रोडक्ट सेल करना है या कोई सर्विसेज सेल करनी है, नहीं, आपको अपने आइडियाज़ भी सेल करने हैं, किसी को कन्विंस करना है अपने आइडियाज़ के बारे में, अपने थॉट्स के बारे में। मतलब ऐसा हम बोलते हैं ना कि किसी को आपकी बात मनवानी है, अगर आपको वो आता है देन यू कैन डू द सेल्स। ओके, एंड आई एम श्योर यू वांट टू डू दैट इन द जॉब इंटरव्यू। आपको इंटरव्यूअर को कन्विंस करना है कि यस आई एम द बेस्ट कैंडिडेट फॉर योर कंपनी, एंड वंस यू आर डन दैट, द जॉब इज योर्स। ओके, great, thank you. So after that, what you need to showcase in a job interview, the next thing is that, yes, now this is very important. जब आप इंटरव्यू में रहेंगे, जब आप इंटरव्यू को फेस करेंगे, what are the different stages or what are the different parts of interview that you have to face? What is the first thing in the interview? What would be the second thing? What would be the third thing? Like, so कितने stages इंटरव्यू के होते हैं, parts, और क्या सीक्वेंस में होते हैं? Who will tell me in the comment section? Okay, you want an example for what? Like, what example you want me to explain? By the way, what are the different interview stages? Okay, let's do one thing. I will address this question maybe at the end of this session. We will have a special Q&A session, question and answer. Okay, so now what are the different interview stages, different interview parts? Okay, introduction, HR ask you job related questions. Do you have any questions? Okay, Drupal, very nice. Okay, introduction, background and experience, behavioral questions, technical questions, company and role understanding, questions for the interviewer, cultural fit and the soft skills, closing and next step. Very nice. Brilliant. Okay,
So in short, I'm going to explain this thing in short. Basically what I have done, I have divided an interview in the four parts. Okay, and the first part is, you can see on the screen, it's about the introduction. Tell me about yourself. No matter what job you are applying for, the first question is always going to be, can you tell us something about yourself? Can you introduce yourself? Okay. And the video that we have shared with you, I have explained everything in that. First thing, why interviewers ask these questions, tell me about yourself. सो उसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा बिकॉज वीडियो हमने शेयर किया, पर इतना आपको ज़रूर बताऊँगा कि व्हेन इंटरव्यूअर आस्किंग दिस क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आपके लिए इतना समझना ज़रूरी है कि इंटरव्यूअर इज एक्चुअली नॉट आस्किंग दिस क्वेश्चन. He is not asking you to introduce yourself. He is asking totally a different questions, and there is not only one question, there are five questions that interviewer is asking you. How many questions? जब इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि क्या आप खुद को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, you need to answer five questions. Please understand. And I have explained those five questions in that video. Okay, that's a fantastic video. आप एक बार देखेंगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि exactly what you need to do, how to introduce yourself. Okay, और मैंने उसमें एक एग्जांपल भी दिया है, स्मार्टफोन. अगर आप किसी स्मार्टफोन गैलरी में अगर वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे खुद को एज ए स्मार्टफोन सेल्स एग्जीक्यूटिव अगर आपको सेल करना है, आपको इंट्रोड्यूस करना है, तो आप कैसे करेंगे? विद एन एग्जांपल आई हैव एक्सप्लेन दैट. अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छा, जिन्होंने नहीं देखा एक बार ज़रूर देखें. ट्रस्ट मी, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा एंड यू विल कम टू नो समथिंग वेरी न्यू थिंग. बिकॉज ये कोई नहीं बताता है कि आपको इंट्रोडक्शन में बोलना क्या है. सभी लोग जाके बस ऐसा पूछा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड यू स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट योर सेल्फ. ओके सर, माई नेम इज सो एंड सो, दिस इज माई क्वालिफिकेशन, दिस इज माई हॉबीज, दिस इज माई फैमिली बैकग्राउंड, दिस इज वॉट आई डू, blah blah blah. This is not going to work, I am telling you, because you need to sell yourself. You just not need to introduce yourself. Okay, next thing, after introduction, once you will give your introduction, the next thing will be there, the technical round. You will be asked direct questions. So direct questions means technical questions. जो आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड कोर क्वेश्चंस, कि उस जॉब में आप कैसे परफॉर्म करोगे, आप अपने रोल को कैसे प्ले करोगे, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे परफॉर्म करोगे, हाउ विल यू डू दैट जॉब, उससे रिलेटेड कोर टेक्निकल क्वेश्चंस. ओके, वो उनको हम डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बोलते हैं या उनको हम टेक्निकल राउंड उसको बोलते हैं. करेक्ट? ओके. Third thing, after technical round, there will be an HR round and we call it behavioral questions. Okay, वो आपको कुछ behavioral questions पूछेंगे. And what are behavioral questions, we will get to know in the next slide. Okay, I'm going to explain you everything. HR राउंड के बाद में एक राउंड और होता है, बट वो हर इंटरव्यूज में नहीं होता, लेकिन समटाइम्स इट हैपन्स, और वो होता है scenario based questions. Okay, so they can ask you some questions based on the scenario. They will share one example with you, one situation with you, and they will tell you that what you will do in this situation. For example, if you are a medical representative, okay, and let's say you are visiting a hospital, you are visiting a doctor, okay, and you know, like, you can sell your products to that doctor, but that doctor is convinced, but let's say the one who is like administration of that hospital, the administrators of that hospital is not convinced. So how would you convince that administrator, because the doctor is already convinced, बट मे बी जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो उनके कॉलीग होंगे या उनके मैनेजमेंट में होंगे, उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, वो हो सकता है उनका किसी और कंपनी के साथ में टाई अप हो, किसी और फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ में, और वहाँ से परचेज करना चाह रहे हैं. तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. सो दे कैन आस्क यू दिस काइंड ऑफ
they will share one situation and they will ask you कि उस situation में आप क्या करेंगे. So they can ask you this kind of question as well. Normally they don't ask you any personal questions because उनको personal आपकी personal life से उनको इतना कोई like they don't have to do anything with your personal life, so they are not going to ask you any personal questions. उनको ये है कि ये उनकी job requirements है और उस जॉब रिक्वायरमेंट्स में आप कैसे फिट होंगे उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछेंगे. पर हो सकता है एक आध कोई क्वेश्चंस पर्सनल भी वो पूछ ले, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप खुद को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो. If you are talking too much about your personal life, or if you're talking too much about your family background or about your childhood or education, then they might you then might you ask a personal question. Okay, but mostly they don't ask you personal questions. Clear? So first introduction round, second technical round, the third is HR round, and the fourth will be, do you have questions? Somebody wrote that in the comment section, do you have questions? Okay, and we call it asking strategic questions. Okay, so जब आप questions interviewer को पूछोगे, आपको क्यों पूछना है वो question, why you need to ask that questions, and after asking that questions what you need to respond or how you need to respond, we will discuss everything. Okay, so these are the four interview stages. These are the four interview parts: introduction, technical round, HR round, and do you have questions. And you need to clear all those four. Yes, it seems like don't be over smart in an interview. Not only interview, nowhere you need to be over smart. Okay, not even in the classroom, not even with your family, with your friends, with the community, nowhere. Okay, we have to be smart only. Okay, अगर हम स्मार्ट भी बन जाएंगे तो भी बहुत है. ओके, और जो HR है, जो इंटरव्यूअर्स है, दे आर मच एक्सपीरियंस पीपल. ओके, और जब आप कोई भी बंदा अगर ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करेगा, दे विल कम टू नो. ओके, तो कॉन्फिडेंस इज गुड थिंग, ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट ए गुड थिंग, इट्स अ बैड थिंग. ओके, शो योर कॉन्फिडेंस, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. Let me tell you like what is the difference between confidence and overconfidence. Okay, confidence, when one person is confident, the person says like that I can do it. Okay, I can do this. That shows his or her confidence. But somebody says that only I can do this, that is overconfidence. Okay, please remember that it's a very, there is a little difference between confidence and overconfidence. Okay, just a second. I would like to have water and भाई एसी ऑन कर दो ना, बहुत अंदर में सफोकेशन हो रहा है, और मेरे को पानी भी दे दो प्लीज. एसी बंद है, अंदर चालू है. Okay, sorry for the little interruption. So actually I was feeling little bit choking, so that's why I needed some water. So no problem. So yes, so these are the four parts of a job interview. Okay, confidence gives you motivation to work, while overconfidence is a kind of negative thought. Yes, very nice, very true. I think some of you are brilliant. Okay, I can see Krupa, Hetvi, Kavya, Joy, most of you like Jenny. Okay, you guys are really exceptional. So the next thing, okay, now this is very important. Okay, now this question is for you. What is a job description and why is it important for you? What is a job description
and why is it important? Who will let me know? What is a job description and why is it important? Okay, to know how we will proceed further. Okay, a job description is all about the information about the wanted job. Okay, Jenny, brief introduction of the work. That's true. It is detailed information about the vacancy in any company. Job description typically outline the necessary skills, a written explanation, training and education. Okay, okay. A job description that outlines the responsibilities, task, duties, and qualifications. Yes, very nice. Thank you. So let me explain to you. Okay, what you are saying is correct. Let me put it in the best way. Okay, in front of you. First thing, why job description is important, because it explain the roles and the responsibilities. Okay, so whichever job you are applying for, what is the role you have to play and what are the responsibilities that you have to perform. Okay, second thing, from the job description only you will come to know what company is looking for. अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हाउ विल यू कम टू नो कि कंपनी को किस तरीके का कैंडिडेट चाहिए, व्हाट स्किल्स दैट कंपनी इज लुकिंग फॉर. ओके, व्हाट काइंड ऑफ आइडियल कैंडिडेट दैट कंपनी इज लुकिंग फॉर, कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये आपको जॉब डिस्क्रिप्शन से ही पता चलेगी. ओके, सो जॉब डिस्क्रिप्शन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. I'm very happy that you all are talking about this thing, that what is a job description and why is it important. But the thing is that again I'm telling you, you need to apply that. Okay, and we will learn that, like how to answer technical questions, how to answer behavioral questions, or even I will tell you कि based on the job description आप कैसे ये पता कर सकते हैं कि इंटरव्यूअर आपको क्या क्वेश्चंस पूछने वाला है, right? That can also be found out, that can also be figured out with the help of job description. So of course it helps you prepare well for the interview. Yes, it helps both employers and employee understand the expectations and requirements of the role. That's very true. It can serve as a basis for interview candidate and orienting a new employee and evaluating job performance. That's very true. In short, I want to tell you that job description is the one document, उसके बिना employees भी कुछ भी नहीं कर सकता और employers भी कुछ नहीं कर सकता. Okay, so they both need a job description. Okay, for employers it is required because they want to share their requirement. For employees, for the candidate, the job seeker, it is required so that they can understand what they need to say in the job interview, what they have to prepare for in the job interview, right? So, and it helps you in all the things. Okay, it helps you in introduction, it helps you in technical round, it helps you in behavioral questions, and exactly in the next few slides I'm going to explain, and you will be very pleased, you will be very happy. Okay, that you have got this information, you have got this uh, inputs about the job interviews, such an insightful inputs about the job interview. Okay, so I'm going to share a very nice information with you, very, like, uh, very needful information. So first of all, let's फॉर आपके एग्जाम्पल के लिए मैंने एक जॉब डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ मैं. ओके, द जॉब डिस्क्रिप्शन इज अबाउट द मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव. हम 3 दिन से एक इस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जो जॉब जो है, जॉब रोल है,
उसके बारे में रेज्यूमे है, कवर लेटर है, लिंक्डइन प्रोफाइल है, इवन इंटरव्यू में कैसे प्रिपेयर करेंगे, सो दैट आप में से कोई भी अगर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए अप्लाई करना चाहे, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ रियली बेनिफिशियल थिंग फॉर देम, कि वो इसके बाद में उनके लिए इजी हो जाएगा। लेकिन बेस्ड ऑन दिस सेम इंफॉर्मेशन, इसी फॉर्मेट के बेसिस पे आप किसी भी जॉब रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कभी भी कोई क्वेश्चन हो, वी आर हियर। ओके, आई एम टेलिंग यू, वी आर ऑलवेज हियर टू गाइड यू, डोंट यू वरी। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो क्या होता है टिपिकली। फर्स्ट थिंग, you need to develop and execute sales strategies to meet revenue targets। तो एक एमआर का जो फर्स्ट रोल जो होता है, जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो ये है कि उसको रेवेन्यू टारगेट्स अचीव करने होते हैं। तो उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज जो है वो अप्लाई करेगा, कैसे करेगा, सो दैट द सेल्स कैन बी इंक्रीज्ड, ओके, रेवेन्यू कैन बी इंक्रीज्ड, right? Second thing, conduct product presentations and demonstrations for potential clients। So आप किसी बड़े हॉस्पिटल में, क्लिनिक में, डॉक्टर्स के सामने, तो आपके जो प्रोडक्ट्स है उसकी क्या क्वालिटीज़ है, उसके क्या एडवांटेजेस है, हाउ योर प्रोडक्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स, तो उसका प्रेजेंटेशंस, उसकी डेमोन्स्ट्रेशंस आपको जो क्लाइंट्स, जो आपसे परचेज करने वाला है कस्टमर्स, उसके सामने कैसे करेंगे, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थर्ड इज प्रोवाइड पोस्ट सेल्स सपोर्ट एंड एड्रेस कस्टमर इंक्वायरीज एंड इश्यूज। ओके, तो सिर्फ इतना नहीं कि आपको सेल्स ही करना है, बट आफ्टर सेल्स भी आपको सर्विस देनी है। एंड आई वॉन्ट यू टू प्लीज रिमेंबर दीज पॉइंट्स ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन, बिकॉज इसी के बेसिस पे जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, आपका टेक्निकल क्वेश्चंस, बिहेवियरल क्वेश्चंस, एवरीथिंग विल बी बेस्ड ऑन दिस जॉब डिस्क्रिप्शन ओनली। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपको जॉब डिस्क्रिप्शन समझ में आ गया, अगर आपने जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से एनालिसिस कर लिया, तो समझ लो आपका इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो गई। उसके बाद में सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, अदरवाइज यू आर ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू, फॉर एनी इंटरव्यू, राइट? कोलाबरेट विद क्रॉस फंक्शनल टीम्स टू एनहांस। ओके, अब आप जिस भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में आप जॉब करेंगे, तो आप सिर्फ वहाँ पे एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का रोल नहीं है, वहाँ पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी होगा, वहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी होगा, वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट भी होगा, वहाँ पे और मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, और भी दूसरे एचआर डिपार्टमेंट होंगे। तो वो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो जो क्रॉस फंक्शनल टीम्स है, उनके साथ में आप किस तरीके से कोलैबोरेट करेंगे और किस तरीके से आप जो है अपने जॉब को बेटर तरीके से परफॉर्म करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज यस, स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशन एंड क्लोजिंग स्किल्स, बिकॉज एमआर इज ऑल अबाउट सेलिंग। ओके, आपको प्रोडक्ट सेल्स कर रहे हैं, आपको मेडिसिन और या जो भी प्रोडक्ट्स है, मेडिकल से रिलेटेड इक्विपमेंट्स है, वो आपको सेल कर रहे हैं। सो आपको नेगोशिएशंस आना चाहिए और सेल्स क्लोजिंग स्किल्स आनी चाहिए। और मैं तो आपको पहले से ही बोल रहा हूँ कि सिर्फ इस जॉब के लिए नहीं, इवन फॉर जॉब इंटरव्यू यू नीड टू डेवलप द सेलिंग स्किल्स। ओके, अगर जो भी पर्सन बेस्ट तरीके से खुद को इंटरव्यू में सेल करेगा, उसको वो जॉब ऑफर होगा। दिस इज माई एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन फॉर द पास्ट 10 years। जो बेस्ट तरीके से प्रेजेंट करता है खुद को, उसको जॉब मिल जाती है। उसमें भले ही आपकी टेक्निकल स्किल्स कम हो या आपको नॉलेज कम हो, पर अगर आप कॉन्फिडेंटली खुद को प्रेजेंट करते हैं ना, तो जॉब मिल जाती है। दैट्स अ फैक्ट, और दैट इज व्हाट गोइंग ऑन एक्चुअली इन द मार्केट। And you also need to have effective communication and presentation abilities, right? So आपको, ये तो मैंने पहले भी आपको इंटरव्यू के बारे में भी बताया, ये एक ऐसी स्किल है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। ये आपको किसी भी जॉब में, इट कैन बी एनी जॉब, ओके, आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रेजेंटेशन स्किल्स तो होनी ही चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप क्लाइंट के सामने ही कुछ प्रेजेंट करेंगे, आप अपनी टीम्स को भी तो कोई चीज़ प्रेजेंट करेंगे, आप अपने कॉलिग से बात करेंगे, आप अपने मैनेजमेंट से, सीनियर से बात करेंगे, आप अपने जूनियर से बात करेंगे, दूसरे डिपार्टमेंट से बात करेंगे। कम्युनिकेशन
This is what we are doing. And not only in a job, in our personal life as well, we need effective communication. अगर आप एक चीज अगर अच्छे से इम्प्रूव कर दे, डेवलप कर दे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ट्रस्ट मी, you will be successful in the every affair of your life. Every field, everywhere you will go, you will be successful if you develop the effective communication skills. And there is a way to learn, there is a way to develop effective communication skills, and we really like take pleasure in that we teach people how to build their effective communication skills. Okay, if you have done well in the interview but still you don't get the job, I think that is not possible. Okay, there might be some reason. If you are really doing well, because देखो एक चीज और समझो आप, maybe you are thinking that you have done well in the job interview, but from the interviewer's perspective this was not a good interview, right? So what we believe, okay, we have to make the same thing believe that interviewer. Your first जो मेन गोल आपका ये है कि आपको इंटरव्यूअर को कन्विंस करना है कि यू आर द बेस्ट फिट फॉर दिस रोल. तो अगर आप ऐसा लगता है कि आपने बेस्ट अपना दिया फिर भी आपको जॉब नहीं मिला, तो ये आपको लगता है इंटरव्यूअर को ऐसा फील नहीं हुआ, ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, अदरवाइज वो जॉब आपको मिल जाती. So you need to think and you need to talk what interviewer is looking for. That's why I'm telling you. इसका एक रीजन और भी हो सकता है कृपा. दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन बाय द वे. होता क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आप जॉब के लिए आप जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो होता ये है कि आप बहुत अच्छे से आंसर देते हो उसका क्वेश्चन का, आपको ऐसा लगता है कि यू हैव गिवन एंड दैट लाइक टेक्निकली इट्स करेक्ट, बट द प्रॉब्लम इज दैट जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो उससे अलाइंड नहीं हो पाता है. What I am trying to teach you or tell you is that each and every answer that you are going to give in the interview, it must be aligned with the job description. ये जो keywords आपको job description में अभी दिख रहे हैं, you have to use these keywords while answering, while giving your answer. If you do that, trust me, 100% you will get the job. Otherwise there can be some reason. For example, if they are looking for the, let's say you don't know because you are applying as one of the applicants, maybe you are having like 2 years of experience, but somebody is there who is having 4 years of experience, so maybe company will prefer the more experienced person first. So you give your best, but उनको हो सकता है आपसे भी एक better जो है वो एम्प्लॉय मिल गया हो, एक बेटर कैंडिडेट उनको मिल गया हो मैच. Yes, for academic job, let's say if you want to be a teacher or professor, I think the one thing that you need to have again the communication skills, because when you will go to any college or school to apply for that job, let's say for the teaching job, you will have to give a demo lecture, right? You will have to take a demo lecture, and जो आप demo lecture लेंगे उसमें जो भी feedback आएगा students का, उसके basis पे आपको job मिलेगी. तो वहाँ पे I think interview matters, but what more matters is the demo lecture, the demonstration of your teaching skills. If this is a non-technical, non-teaching job, because school, college में भी non-teaching jobs होती है, वहाँ पे obviously you will have to crack the interview, क्योंकि वहाँ पे demonstration आपके lecture का, teaching skills का नहीं होगा. You got it? Okay, Krupa, thank you. Other people can also ask me questions, okay? Because the more you are going to ask me questions, the more you are going to clear your doubt and the more you are going to learn. और एक ऐसी, like there is a saying that if you ask a questions, okay, in front of the class, you might look fool, okay, for the 10 minutes or 15 minutes, okay, since you are in that class. But if you are not going to ask the questions and not going to get that doubt cleared, you are going to be fool for the rest of your life. Because वो doubt जो था ना, आपने पूछा नहीं, hesitation की वजह से वो doubt आपके दिमाग में ही रह गया. वो doubt आप हमेशा carry करते हुए रहेंगे, आपका doubt clear नहीं हुआ. So it's better कि 10 मिनट के लिए किसी के सामने फूल बनना
इससे कि भाई पूरी लाइफ के लिए मतलब फूल रहना कि मुझे वो अभी भी डाउट है, डाउट है, डाउट है। इससे अच्छा जो भी डाउट हो, लेट्स गेट इट क्लियर। ओके, ओके। नेक्स्ट इज customer centric mindset and problem solving skills. So these are the job descriptions. Now we will get to know, now we will discuss कि based on this job description how we can prepare for the job interview. Okay, यही जो प्रिंसिपल्स है, यही जो टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, यही अप्लाई होंगे हर किसी जॉब के लिए, चाहे वो कोई भी जॉब रोल हो, बट वे विल बी द सेम टू प्रिपेयर फॉर दैट। ओके, जॉब डिस्क्रिप्शंस is the most important document. So introduction, tell me about yourself. Let's talk about this thing. I've already told you, okay, you need to introduce yourself. You need to sell yourself based on the job description. Again, I'm telling you, okay. Even introduction में भी आपको job description में जितने भी जो points mention है वो आपको वहाँ पे mention करने हैं. That means you have to talk about those points. Okay. So we have already shared a video for that. Why this question is asked, how to answer these questions, what is the best way to answer these questions. Everything we have explained, okay, in one video which is already shared with you. Please watch that video. Just an 8 to 10 minutes video, but it's going to clear all your doubts. And that 10 minutes of your life that you're going to invest to watch that video will save you in your next job interview, will help you to give the best introduction, okay, of yourself in any job interview. Please kindly watch that. Okay, now can we please uh, remove this poll so that I can see the comments. So after introduction, the next thing is technical round, direct questions. Okay, कैसा होगा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप जो भी जॉब इंटरव्यू में अपीयर होने वाले हो, उस जॉब इंटरव्यू से पहले ही आपको क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो मैं आपके साथ में शेयर कर लूँ कि दीज आर दी 10 क्वेश्चंस और ये आपको इंटरव्यूज़ में पूछे जाएंगे, या उन्हीं 10 में से आपको कोई भी 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विल यू बी हैप्पी अगर आपको ये चीज़ पता चल जाए इंटरव्यू से पहले ही कि आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे? विल यू बी एबल टू प्रिपेयर वेल फॉर द इंटरव्यू? अगर या मैं आपको ये इस एग्जाम्पल से अगर आपको समझाऊँ, सिंस यू आर स्टूडेंट इन कॉलेज, आपकी एग्ज़ाम से पहले ही आपको अगर ये रिवील कर दिया जाए कि दीज आर द टॉपिक्स, ओके, जिसमें से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या दीज आर द क्वेश्चंस दैट विल बी आस्क्ड टू यू, विल यू बी हैप्पी? विल यू गो टू द इंटरव्यू और द एग्जाम विद द कॉन्फिडेंस और नॉट? अगर पहले से ही पता चल जाए कि इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे या एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि जो एग्जामिनर है, जो इंटरव्यूअर है, वो खुद बता रहे हैं आपको कि भैया मैं आपको ये क्वेश्चन पूछने वाला हूँ इंटरव्यू में, विल यू बी हैप्पी? So what I'm telling you, there is an exact way for that, okay? You can guess कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, and I can guarantee you that 99% आपका जो guess होगा, आपका जो anticipation होगा क्वेश्चंस के बारे में, that will prove right. आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, और वही मैं आपको नेक्स्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू शेयर दैट विद यू. यस, कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, बिकॉज एग्जाम से पहले ही अगर आपकी फाइनल एग्जाम है और उसके पहले अगर आपको एक वीक पहले पता चल जाए कि क्वेश्चन पेपर ही आपको, फॉर एग्जांपल, कि ये क्वेश्चन पेपर आने वाला है, तो आई थिंक यू कैन प्रिपेयर सो वेल, right? Because you know these are the questions I have to prepare and these are the questions I have to give answer for, or I have to write the answer for. So that can be possible with the help of the job description. मैंने आपको बोला था आप job descriptions जो है उसको याद रखिएगा, because with the help of job description we are going to find out what technical questions you are going to face and what
even behavioral questions you are going to face. Okay, so सबसे पहले हम लोग टेक्निकल क्वेश्चंस जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. I will not, because what they always start the interview test in that question. Will definitely go with full confidence. Sorry, I didn't get you, Krupa. I will not, because what they always start the interview test in that question. By the way, I can tell you, अगर job descriptions से कैसे questions आपको anticipate करने, that's what I'm going to share with you. Don't worry. I'm telling you 99% you will be right. आपसे वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे. इसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज वो जो जॉब डिस्क्रिप्शन में जो रिक्वायरमेंट है वो खुद उस कंपनी ने, उस एम्प्लॉयर्स ने शेयर करी है कि हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए जो जिसके अंदर ये स्किल्स हो, जो ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल कर सके. तो जितने भी क्वेश्चंस जो आएंगे वो उसी स्किल्स में से जो रिक्वायरमेंट्स है और उसी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ में से ही वो पूछने वाला है. बट कैसे क्वेश्चन पूछ सकते, what kind of questions they are going to ask you, like how they are going to ask, किस वे में पूछेंगे, that's a different thing. बट वो कीवर्ड रहेगा कि क्वेश्चन उसके बारे में ही होगा. ओके, सो डोंट वरी. सो फर्स्ट टेक्निकल क्वेश्चंस. ओके, जो जॉब डिस्क्रिप्शन अभी हमने देखा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का, आप चाहो तो उससे मैच कर सकते हो. ओके, बिकॉज वो क्वेश्चन उसी के बेसिस पे है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट how do you successfully execute a sales strategy to achieve your revenue targets? If you remember, this was the first point. This was the first statement of that job description. Yes, okay, Krupa, I got it. So, of course, they are not going to share the questions with you, but they are going to share the like kind of chapters or the topics. Okay, so here the chapters and topics are the responsibilities and the role and the skills. Okay, so first questions, if you are going to apply for that medical representative job. और एक चीज़ मैं और आपको बोल रहा हूँ, जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है तो एक काम आप कीजिएगा, आप कोई भी एक जॉब जो वैकेंसी अभी मार्केट में चल रही हो, ठीक है, उस वैकेंसी को, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन आप लीजिए, उसके लिए अप्लाई करिए, एक बार इंटरव्यू फेस करके देखिए. जितने भी पॉइंट्स जॉब डिस्क्रिप्शन में है, क्वेश्चन सारे जॉब डिस्क्रिप्शन से ही होंगे फॉर श्योर. Okay, so how do you successfully execute a sales strategy to achieve your revenue targets, right? The next question can be, what points do you cover when you make a product presentation? Because वहाँ पे this was the requirement that you need to demonstrate the products and you need to present the products in front of the potential customers. Okay, so there will be a probable possible questions on that, what points do you cover when you make a product presentation. So देखो ये कितना इजी हो गया कि इंटरव्यू में जाने से पहले क्वेश्चंस ही आप ही प्रिपेयर कर रहे हो और आंसर भी आप ही प्रिपेयर कर रहे हो. दैट मीन्स इंटरव्यूअर इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग. इंटरव्यूअर सिर्फ आपने जो प्रिपरेशन की है वही क्वेश्चंस आपसे पूछने वाला है, एंड यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, राइट? सो इट्स दैट इजी. द नेक्स्ट क्वेश्चन मे बी, what steps do you take to ensure customer satisfaction post sales? If you remember, post sales एक कीवर्ड था उसके अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन पे. सो देयर इज अ क्वेश्चन विच इज मेड ऑन दैट कि आप क्या स्टेप्स लेंगे कस्टमर्स टू एंश्योर दैट कस्टमर इज सेटिस्फाइड पोस्ट द सेल्स. आपने सेल्स तो कर दिया, you have sold the product, but after that how will you make sure, how will you ensure that the customer is satisfied? So अभी यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, ये जितने भी क्वेश्चंस है यहाँ पे आपको अपना अप्लाइड नॉलेज शेयर करना है. अब आप ये नहीं बोलोगे यहाँ पे कि सर आई एम गोइंग टू टेक
this and that, or I'm going to take this steps to ensure the customers. आपको यहाँ पे experience बताना है कि sir in my current job or in previous job this is what I am doing to ensure my customers satisfaction after the sales. This is what I do, these steps I am taking, and with the help of those steps I am ensuring that customers are satisfied. Applied knowledge, राइट? तो जितने भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे यूज करने होंगे. यू विल हैव टू अप्लाई ऑल दोज थिंग्स, देन इट्स गोइंग टू वर्क. यू गेट इट? ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन माइट बी, what challenges did you face in collaboration with other teams and how did you overcome that? बिकॉज वहाँ पे एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ये भी थी कि आपको जो क्रॉस फंक्शनल टीम है उनके साथ में कोलाबरेट करना पड़ेगा और उनसे समझना पड़ेगा कि प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट क्या है और उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है या कैसे प्रोडक्ट को इम्प्रूव किया जा सकता है. बिकॉज यू आर टॉकिंग टू द क्लाइंट्स, डॉक्टर्स, और उनकी क्या फीडबैक है वो आप उनको दे सकते हैं, प्रोडक्शन टीम को, क्वालिटी टीम को, राइट? तो नाउ व्हाट दे आर आस्किंग यू दिस क्वेश्चंस, और आप देखिए कि वो एक्चुअल में क्या टेस्ट कर रहे हैं. वो यहाँ पे ये टेस्ट कर रहे हैं कि आपकी कोलाबरेशन स्किल्स जो है उसमें अगर अगर आप जब भी कोलाबरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज दे आर फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट, फ्रॉम डिफरेंट टीम्स, एंड उनका माइंडसेट अलग है, उनकी थॉट्स अलग है, उनके एक्सपीरियंसेस अलग है, उनकी स्किल्स अलग है, उनकी कम्युनिकेशन स्टाइल अलग है, तो आप इतने अलग अलग लोगों से कैसे कोलाबरेट कर लेते हो? और जब भी आपने कोलाबरेट करने की कोशिश की, ऐसा तो नहीं कि फर्स्ट टाइम एज ए फ्रेशर आपने कोलाबरेट कर लिया, आपको कोई चैलेंजेस फेस ही नहीं हुआ. सो दे आर ट्राइंग टू आस्क कि व्हाट challenges did you face while you tried to collaborate with different cross functional teams? और जब वो challenges face हुए तो आपने उनको कैसे overcome किया? How did you work on those challenges? Right? Now ये जो 4 questions है, it is purely based on the job descriptions. अब ये हो सकता है कि ये जो क्वेश्चंस मैंने जिस तरीके से प्रिपेयर किए आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ये क्वेश्चन किसी और तरीके से पूछा जा सकता है, बट कोलाबरेशन के बारे में तो होगा ही, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बारे में होगा, बट ये क्वेश्चंस कुछ और तरीके से वो पूछ सकते हैं, वो एक अलग बात है. बट ये है कि क्वेश्चंस वो आपको ज़रूर पूछेंगे और वो सब जॉब डिस्क्रिप्शन से ही होंगे. अब इसमें एक चीज़ और है, किसी ने पूछा था कि अगर व्हाट इफ दे आस्क यू पर्सनल क्वेश्चंस. अब यहाँ पे ये भी हो सकता है, जब वो क्वेश्चंस आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ रहे हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बारे में, आपको उतना ही आंसर देना है. डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट और आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करनी, अदरवाइज क्या होगा, यू विल ट्रैप योर सेल्फ. ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन योर आंसर, और वो फिर आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा. जॉब डिस्क्रिप्शन इज अ सिलेबस. Yeah, they can twist the questions. Okay, if you are not trying to be over smart, if you are very like like you are talking in a simple way, okay, you are talking in an easy way, you are not trying to like show your overconfidence or kind of thing, वो आपसे जैसा क्वेश्चन आप पूछोगे वैसा वो पूछेगे, वैसा आप आंसर दोगे अच्छे से, सिंपल से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके, पर हाँ, ट्विस्ट कर सकते हैं, क्वेश्चंस को ट्विस्ट कर सकते हैं. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू. The thing is that I cannot explain you each and everything in this 1 hour or even in this 3 hours जो हम पिछले 3 दिन से कर रहे हैं. I am telling you, I think minimum it will take 30 hours to understand each and everything. उसके बाद में उसको practically apply भी करना है. जब आप apply करोगे तब भी आपको, for example, I have taught you all this thing. You went to the job interview and then you faced there some challenges. Okay, सो वहाँ पे प्रैक्टिकली आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में चैलेंजेस क्या है. देन अगेन यू नीड टू टॉक टू मी सो दैट आई कैन गाइड यू कि ओके, इफ यू आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ चैलेंजेस, देन दिस इज हाउ यू नीड टू वर्क ऑन दैट, राइट? सो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. नोबडी कैन लर्न. आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल दिस थिंग जो 3 दिन में मैंने आपको सिखाई है. आई थिंक आई हैव लर्नड दिस थिंग इन 10 years. 10 साल में जो मैंने सीखा है वो मैंने आपको पिछले 3 घंटे में, पिछले 3 दिन के 1-1 घंटे के सेशन में आपको एक्सप्लेन किया है. 10 साल का एक्सपीरियंस निचोड़ के रखा आपके लिए, बट इसको आपको अप्लाई भी करना पड़ेगा प्रैक्टिकली. जैसे कि हमने बोला कि एक्सपीरियंस से लर्निंग, तो हम जो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवाते हैं
उसमें हम आपको प्रैक्टिकली ये चीज़ सिखाते हैं। सिर्फ मॉक इंटरव्यूज नहीं करवाते, बट कि प्रैक्टिकली आपको अप्लाई करवाते हैं जॉब्स के लिए। जब आप अप्लाई करते हो फिर आप अगेन कि आपको क्या चैलेंज फेस हुआ, नेक्स्ट टाइम वी वर्क ऑन दैट। सो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। ओके, ओके, बाय द वे दीज आर द टेक्निकल क्वेश्चंस। ओके, अब ये कोर क्वेश्चन है आपको, जो ये तो आपसे पूछे ही जाएंगे कम से कम। ओके, बिकॉज वो जानना चाह रहे हैं कि आप कैसे अपनी जॉब को परफॉर्म करोगे, हाउ यू आर गोइंग टू डू योर जॉब, or whether you are going to do your job well or not. Now let's talk about the HR round, behavioral round. Okay, I hope you guys are not getting bored और आपको लेट भी नहीं हो रहा है, because I think it might take 15 minutes more to conclude this session. So I hope you are with me. Yes? Thank you, Kavya. I'm so pleased to know that. And I'm really happy, okay? Because being a coach or this Know How Academy, we are here to guide people. I told you, okay, in the beginning, that what Know How Academy is all about. Know How Academy is all about guiding the individuals like you to develop the necessary skills, okay, so that you can grow in your career. And we are here to help. So, based on the HR behavioral questions, based on the job description, क्या हो सकता है? Okay. First, let's understand that why they ask behavioral questions. Okay. So, behavioral questions are asked to evaluate your soft skills. Thank you. Thank you so much. सो बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपकी सॉफ्ट स्किल्स जो है। अब टेक्निकल स्किल्स तो आपकी टेस्ट हो गई, टेक्निकल राउंड में दे आस्क यू द टेक्निकल क्वेश्चंस रिलेटेड टू द जॉब, जो कोर क्वेश्चंस है। नाउ दे वांट टू टेस्ट योर सॉफ्ट स्किल्स, ओके, एंड दे वांट टू टेस्ट योर बिहेवियर, कि कौन सी सिचुएशन में आप कैसे बिहेव करेंगे। सो आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स कैसी है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसी है, आपकी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट या रेजोल्यूशन स्किल्स कैसी है, आपकी टीम प्लेयर एबिलिटी कैसी है, वेदर यू विल बी एबल टू वर्क इन अ टीम, या आप जो है इंट्रोवर्ट हो, आप एक्सट्रोवर्ट हो। ये सब चीज़ें जानने के लिए, और आप किसी भी सिचुएशन में, इफ़ फॉर एग्जांपल योर कस्टमर्स आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट एबल टू मीट योर टारगेट्स फॉर पास्ट 3 months, or you are not able to interact well with your other colleagues, then आपकी उस सिचुएशन में हाउ वुड यू बिहेव, ओके, व्हाट वुड बी योर रिएक्शन और रिस्पॉन्स, वो जानने के लिए दे आस्क यू बिहेवियरल क्वेश्चंस। ओके, so let's see what kind of behavioral questions you might face based on the job description. Same job description, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए क्या behavioral questions वो पूछ सकते हैं आपसे। So first question is, what is customer centric mindset and its advantage? Okay, so they are trying to know from you कि customer centric mindset क्या होता है और इसके advantages क्या है, why one company should have the customer centric mindset. So आपको आपका experience बताना है in your current job, in your previous job, आपकी customer centric mindset की वजह से उसको क्या advantage होता है कंपनी को। So you have to share your experience, okay, and you have to share an example of your negotiation skills when you cracked a tough sales deal. अब वो यहाँ पे आपकी सेलिंग स्किल्स और नेगोशिएशन स्किल्स टेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज वो उनकी रिक्वायरमेंट है। टू बी अ सक्सेसफुल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यू नीड टू हैव नेगोशिएशंस एंड सेलिंग स्किल्स एज पर द जॉब डिस्क्रिप्शन। अब ये जो क्वेश्चन है मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूँ, जो जॉब डिस्क्रिप्शन में है उसी के बेसिस पे हम बना रहे हैं। Okay, so if, as Neha is asking, if we are not able to give answer of some of the questions in the interview, so how should we reply as a better way to interview? Okay, very good questions, okay,
and this happens many times, okay, because you cannot answer each and every questions, okay. First thing, okay, for example, if they are asking you 10 questions, okay, out of 10, if you are not able to answer any one questions, that is fine. There is no problem with that, okay. They also understand this thing, that you cannot answer each and every questions. But the thing is that you have to face that questions with the confidence. उस टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो शैटर नहीं होना चाहिए, ओके, आपके चेहरे का रंग नहीं उड़ना चाहिए कि नाउ व्हाट कैन आई डू, आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके, वो नहीं होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आपको कुछ भी ऐसा डोंट ट्राई टू कि कुछ भी बोल रहे हो आप, कुछ भी आंसर दे रहे हो, नो, यू कैन सिंपली से सर आई डोंट नो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, मे बी आई हैवंट लाइक यू नो स्टडी अबाउट दिस थिंग। बट एक चीज़ है, जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, दैट इज वाई प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड। ओके, लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, ओके, जैसे कि आपने क्वेश्चन पूछा, इसके अगेंस्ट में मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, ओके। नेहा, अगर आपका एग्जाम है फाइनल, ओके, और फाइनल एग्जाम में आपको वहाँ पे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चंस है, उसमें से अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं दे पा आंसर नहीं दे पाओगे, आपको नहीं आता है या रॉन्ग आंसर आपने लिखा है, तो क्या होगा? आपके उस क्वेश्चंस के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, बाकी क्वेश्चंस के लिए तो मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चंस की वजह से आपका पूरा इंटरव्यू जो है वो वेन में चला जाएगा, वो लाइक इट विल बी डिस्ट्रॉयड, नो, ऐसा नहीं होगा। आपको बाकी जो 7-8 क्वेश्चंस है वो आपको अच्छे से आंसर उसका देना है। एक दो क्वेश्चंस नहीं भी दे पाएंगे तो चलेगा, और स्ट्रेट फॉरवर्ड एम्प्लॉयर्स को भी अच्छा लगता है जब आप ये बोलेंगे कि यस सर आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस, ऑनेस्टी, ओके। आपकी जो इंटेग्रिटी है, आपका एटीट्यूड वैसा होना चाहिए कि यस यू आर ऑनेस्ट, आपको नहीं आता है तो आपने उनको क्लियरली बोल दिया कि मुझे ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है। बट वी हैव टू मेक श्योर कि अगर हम जॉब डिस्क्रिप्शंस की मदद से वो कर रहे हैं, एंड देन इफ़ यू वांट टू गेट दैट जॉब, तो आपको पूरा नॉलेज जो है वो लेना ज़रूरी है, ओके। अदरवाइज आप नहीं दे पाओगे आंसर तो कोई और दे देगा, जॉब उसको मिल जाएगी। सो इन द जॉब इंटरव्यू वी कैन नॉट मेक एनी एरर, ओके। आपको यू हैव टू गिव योर मोर देन 100%। इट्स नॉट अबाउट मार्क्स, कोई आपको वो मार्क्स नहीं देते। मैं अगेन आई एम टेलिंग यू, जिस तरह के प्राइवेट सेक्टर के जॉब में आप अप्लाई करेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू deduct your marks for that question in the interview, okay, you are talking about the exam, okay, I got that, but in the interview वो आपका एटीट्यूड चेक करते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन चेक करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखते हैं, और ओवरऑल एज ए प्रोफेशनल आपको इवेल्युएट और जज करने की कोशिश करते हैं, और उसी की बेसिस पे आपको जॉब मिलती है, ओके। अगर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं भी आता है तो यू कैन टेल देम दैट सर यस आई नो आई डोंट नो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस, आई डोंट नो हाउ दिस थिंग इज डन, बट सर आई एम a kind of person, okay, I am going to learn this thing and I'm going to find out the way how this thing is done, because nobody is a learned person since the birth, we all come to this world and then only we learn. So ये आपको कुछ ऐसा स्मार्ट आंसर देना होगा, okay. It's not about any टाइमिंग। देखो, अगर इंटरव्यू आपका जितना जो है वो एक्सटेंड हो रहा है फॉर द लॉन्गर टाइम, दैट मीन्स इंटरव्यूअर्स आर इंटरेस्टेड इन यू। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं होगे, वो आपको जो आपका इंट्रोडक्शन वाला क्वेश्चंस है या उसके बाद में कुछ और एक दो क्वेश्चन पूछने के बाद में, इफ दे आर नॉट इंटरेस्टेड दे विल लेट यू नो आफ्टर 10 to 15 मिनट्स दैट यू मे गो, यू मे लीव। बट अगर आपका इंटरव्यू जो है वो एक्सटेंड हो रहा है फॉर द लॉन्गर टाइम, देन ट्रस्ट मी दे आर इंटरेस्टेड टू टॉक टू यू। You got that point? And it's your duty, it's the duty of the candidate that they have to make sure that they are dragging this interview for the longer time, half an hour, 40 minutes, 50 minutes, 1 hour। क्योंकि एक सीधी सी बात है, मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर कोई आपसे बात कर रहा है लेकिन आपको उससे बात करने में इंटरेस्ट नहीं है, आपने 5-7 मिनट बात किया, फिर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, विल यू टॉक टू देम फॉर लॉन्गर टाइम? नो।
सो इट डजेंट मैटर। बट हाँ, इंटरव्यू के बारे में एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि जब आप खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे, मैंने उस वीडियो में भी ये चीज़ बताई है इंट्रोडक्शन के अंदर, एटलीस्ट यू नीड टू स्पीक फॉर 3 to 4 मिनट्स। बहुत सारे कैंडिडेट्स को मैंने ऑब्जर्व किया है, दे ओनली ट्राई टू conclude their introduction in like few seconds, maybe 30 seconds, 40 seconds, 1 minute or 1.5 minute. No, at least speak for 3 to 4 minutes because you are there to sell yourself। 1 मिनट में आप अपने बारे में क्या बताएंगे? You need to speak for 3 to 4 months, 4 minutes, sorry, and then you need to explain everything, who you are as a professional and how your skills match with the job description, जो उनकी requirements है उनसे कैसे match करती है, and what you are going to contribute। I'm again telling you, you need to watch that video. Once you will watch that, definitely you will love that। Okay, okay, thank you so much that you like that। So आपकी नेगोशिएशन स्किल्स और सेलिंग स्किल्स टेस्ट करने के ऊपर वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देन अगेन क्रॉस फंक्शनल टीम्स के बारे में एक हो सकता है कि हैव यू एवर फेस्ड डिफिकल्टी इन कम्युनिकेटिंग विद द क्रॉस फंक्शनल टीम। तो यहाँ पे दे आर ट्राइंग टू टेस्ट टू स्किल्स। फर्स्ट थिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, सो दे वांट टू सी कि हाउ डू यू कम्युनिकेट और क्या प्रॉब्लम्स डिफिकल्टीज आपको फेस होती है जब आप कम्युनिकेट करते हो डिफरेंट लोगों के साथ जो वैरायटी ऑफ पीपल है उनके साथ में, और कैसे आप जो है उन डिफिकल्टीज को ओवरकम करते हो, कैसे आप जो है उस सिचुएशन से बाहर निकालते हो खुद को। ओके, तो दिस इज काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे कैन आस्क यू, बिहेवियरल क्वेश्चंस एंड द टेक्निकल क्वेश्चंस। ओके, any other questions? Any questions till what we discussed? Technical questions, job descriptions, behavioral questions, because next we are going to talk about, do you have questions, asking the strategic questions। Okay, so this is the last thing what we are going to discuss today। I know it's taking extra time, but I think uh, I'm doing it for you only। Okay, and it's because of you, because you are so interactive, I'm able to speak that much, I'm able to explain everything, I'm trying to answer all your questions, that's why sometimes it takes extra time, but I hope you are enjoying that। Okay, so do you have questions? I call it asking strategic questions। Okay, पहली चीज, what is the importance of asking strategic questions to the interviewer? आप खुद ही इस चीज़ को मतलब यू कैन एक्सपीरियंस और यू कैन जस्ट थिंक ऑफ दिस थिंग कि जब इंटरव्यू में कोई भी पर्सन जाता है, जब वो इंटरव्यू फेस करता है और उससे पूछा जाता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, आपने ऐसा सुना होगा या ऐसा ऑब्जर्व भी किया होगा या आपने भी कभी ऐसा किया होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी से दैट आई डोंट हैव एनी क्वेश्चंस। ओके, मोस्ट पीपल से दैट। ओके, सो पहली चीज आपको क्वेश्चंस पूछना है। अगर जो वर्स्ट रेस्पॉन्स जो होगा ना, सबसे खराब रेस्पॉन्स ये होगा जब आप ये कहेंगे कि सर आई हैव नो क्वेश्चन। ओके, किसी ने पूछा था कि सर हमने इंटरव्यू बहुत अच्छा दिया लेकिन फिर भी मुझे जॉब क्यों नहीं मिली। आई थिंक मे बी बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, बिकॉज यू डिडंट आस्क एनी क्वेश्चन टू द इंटरव्यूअर। उससे उनको ये लगता है कि आपको जॉब में इतना इंटरेस्ट नहीं है, आपने कंपनी के बारे में रिसर्च नहीं किया है आपको। बिकॉज एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाह रहा हूँ, जब हम शादी करते हैं, ठीक है, अपने लाइफ पार्टनर को फाइंड आउट करते हैं, तो क्या आप ऐसे ही किसी चलते हुए इंसान से उससे आप जो है अपनी शादी का प्रपोजल रख देंगे, आप उनको बोल देंगे शादी के लिए विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चंस, विदाउट नोइंग अबाउट दैट पर्सन, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है। ठीक है, यू वुड लाइक टू नो एवरीथिंग अबाउट दैट पर्सन
then only you are going to tie a knot, right? Then only you are going to marry with that person. Same thing here. अगर आपको कोई क्वेश्चन ही नहीं है कंपनी के बारे में, आप कंपनी को ज्वाइन करने वाले हो, आप उस कंपनी में जॉब करने वाले हो, कंपनी आपको पैसा देने वाली है और आपको कोई क्वेश्चन नहीं है कंपनी के बारे में या जॉब के बारे में, हाउ इज दैट पॉसिबल? फर्स्ट ऑफ ऑल, congratulations for the day one. The winners were DJ Chutki, Hetvi Shah, Thrupal Patel. For the day two, Harshana Patel, Shoman Jha, Kavya Ruparela. For the day three, Thrupal Patel, Krupa Ruparela, Harshana Patel. Congratulations to all of you, because I think because of you this session was so interactive, and because of everybody, okay, because they interacted more and more, that's why their names are suggested here. Otherwise you all have done a fantastic job, you all have asked the questions, and I think this is what the job of a student, asking the questions. Okay, the more questions you will ask, the better you will get the knowledge, the better your doubts will be cleared. Yes, we need to ask the questions. That's what I'm going to tell you. What questions you need to ask, why you need to ask that questions, everything. Now this is very very interesting. Let me tell you, ये जो information मैं आपको दे रहा हूँ, मैं आपको ये पूरे कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि ये चीज़ आपको इंटरनेट पे बहुत कम मिलने वाली है, कि एक क्वेश्चंस कैसे पूछना है, क्यों पूछना है, और उस क्वेश्चन के पूछने के बाद में आपको क्या करना है. And I can tell you, if you use this strategy, okay, definitely you are going to leave your interview at a very good note, and eventually you will impress the interviewer more. Interviewer आपसे और impress हो जाएगा. Okay, so to show your preparation, that you are prepared for the job, for the company, and you want to join this company, when you ask the questions, to highlight your skills and to sell yourself. देखिए, एक दो क्वेश्चन जो आप इंटरव्यूअर से पूछेंगे, उसके कितने बेनिफिट्स है. आपका इंटरेस्ट शो हो रहा है, आपकी प्रिपरेशन शो हो रही है, आप अपनी हाईलाइट जो अपनी स्किल्स है उसको शोकेस कर रहे हो, आप खुद को सेल भी कर रहे हो इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछने की वजह से. अगर आप वो क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे या दो क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएगी. And how it works, okay, so just I think 5 to 7 more minutes and then we are done. Okay, so how it works? First thing you can note it down somewhere, or please remember that minimum you need to ask two questions. Okay, so you have to prepare two questions. Okay, minimum ask two questions, not one. Okay, not three or four, but two questions are enough. Okay, second thing, each question should be asked purposefully. मैं आपको एग्जाम्पल भी देने वाला हूँ, डोंट यू वरी. मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में ये चीज़ सिखाने वाला हूँ कि ये क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है, क्यों पूछा जाता है, और आपको आफ्टर आस्किंग द क्वेश्चंस व्हाट यू नीड टू डू. ओके, तो एक पर्पस होगा. जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, तो आपको पता है कि व्हाई यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चंस. ओके, anticipate the response of the interviewer, and you must reply to the interviewer's response. Okay, so जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपको ये भी पता है कि इंटरव्यूअर्स का रेस्पॉन्स क्या होगा, और जब इंटरव्यूअर्स ने रेस्पॉन्स दे दिया, फिर आपको क्या रेस्पॉन्स देना है वो भी आपको प्रिपेयर रखना है पहले से. सो जल्दी से ये जो एक एग्जाम्पल है वो मैं आपको बता देता हूँ, सो दैट यू विल गेट दिस पॉइंट. उसके बाद में भी अगर आपको और भी इसमें कुछ क्वेश्चन हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट बेटर, यू कैन ऑलवेज अप्रोच अस. सो आप इंटरव्यूअर से ये क्वेश्चन पूछ रहे, बिकॉज इंटरव्यूअर हैज आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन. प्लीज 5 minutes and please try to understand. This is going to be very interesting and very very important for you. Okay,
just 5 more minutes. So as you have been working with this company for long, आप इंटरव्यूअर से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप जो इस कंपनी में काम कर रहे हो इतने टाइम से फॉर लॉन्ग पीरियड, सो व्हाट डू यू रियली लाइक अबाउट दिस कंपनी एंड कल्चर, कुड यू प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। अब जब आप इंटरव्यूअर से ये पूछेंगे कि आप इस कंपनी में इतने लॉन्ग टाइम से काम कर रहे हो तो आपको इस कंपनी के बारे में क्या फील होता है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, तो ऑलवेज ही और शी इज गोइंग टू स्पीक पॉजिटिव अबाउट दैट, राइट? करेक्ट। एंड सो जब आप ये क्वेश्चन पूछेंगे तो इंटरव्यूअर्स का रेस्पॉन्स क्या होगा? सो प्रोबेबल रेस्पॉन्स वुड बी ऑफ द इंटरव्यूअर्स दैट ही विल से गुड थिंग्स अबाउट द कंपनी, राइट? अगर आप एचआर है, उस कंपनी के डिपार्टमेंट के हेड है, और मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि आप इतने टाइम से इस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो आपकी इस कंपनी की कल्चर के बारे में और आपका इस कंपनी में कैसा एक्सपीरियंस है, तो आप क्या इतने साल से 10 साल से काम कर रहे हैं, तो आप नेगेटिव थोड़ी बोलने वाले कंपनी के बारे में, यू आर गोइंग टू टॉक ऑल पॉजिटिव थिंग्स अबाउट द कंपनी, राइट? तो आपको ये पता है कि इसका आंसर क्या होगा, इसका पॉजिटिव वे में ही आंसर होगा। और जब आपको ये पता है कि इंटरव्यूअर्स इज गोइंग टू से ऑल द गुड थिंग्स अबाउट द कंपनी, आपको क्या करना है? आपका रेस्पॉन्स ये होगा कि पहले इंटरव्यू में जाने से पहले आपको कंपनी को रिसर्च करना होगा, ठीक है? सो दैट आप उसको ये बोलेंगे, सर जो भी आपने कंपनी के बारे में, कल्चर के बारे में बताया, जो आपका एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, सर मैंने रिसर्च किया कंपनी के बारे में, and what I have found in my research that exactly the company's culture is very nice, brilliant, okay, and I am really interested, okay, to join this company because of its culture, because the way company nurture the employees, provides the growth and learning opportunities to the company. That's the reason why you have been working for the past 10 years with this company. I think this company gives a long term opportunities to the new employees, so that's the reason I want to join this company, okay? Ask these questions, response of the interviewer, and this is how you need to reply to the interviewer's response. So I hope we are clear with that. So आज हमने एक जॉब इंटरव्यू का पूरा प्रोसेस क्या होता है, उसमें क्या स्टेजेस होते हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस, बिहेवियरल क्वेश्चंस, asking the questions, job description, we discuss everything. Now you just need to apply this knowledge, okay, to gain the practical experience, exposure, okay, how it is done. So next, we are very much interested to talk to you more, okay, to interact with you more. So you can let us know, okay, whenever you want to talk to us again, whenever you have any questions for us, or you want to have more sessions from our side, we are always available for you. So once again, from the bottom of my heart, I want to thank you, everybody, your management, the dean sir, okay, and everybody who is there, okay, who made this possible for the last 3 days we interacted here. Thank you so much, everyone. Thank you so much. So now I will take your leave.